So welcome to this session, everyone. In this session, we are going to discuss your doubts. So this is the first question in which Brinda is having doubt. This is your question of your entry level test by Avanti, right? It was in Google Classroom. Here they are asking if 2a equal to 3b equal to 4c, then what will be the ratio of a is to b is to c, right? Ratio and proportion we are also going to learn in class 8, but थोड़ा बहुत जो आप class 7th में पढ़े हैं उसके हिसाब से if you have to do. Okay. Yes, Siddharth, wait, I will unmute you. What you can do here, students, 2a equal to 3b equal to 4c, you can take it as k. So if 2a equal to k, what will be the value of k? It will be k by 2. If 3b equal to k, what will be the value of b? It will be k by 3. If 4c is equal to k, what will be the value of c? It will be k by 4. Is this clear, everyone? You can tell me yes if you agree. Everyone? Yes or no? Right? नो. सौम्या इज टेलिंग नो. क्या डाउट है इसमें सौम्या? राइट, मैंने सबको के ले लिया. फर्स्ट आई हैव कंपेयर्ड विद 2a विद k, देन 3b विद k, एंड देन अगेन 4c विद k. So if 2a is k, a is k by 2, 3b is k, b is k by 3, 4c is k, c is k by 4. Is this clear? Please give me some response. Right. So now a is to b is to c. समझना. A is to B is to C will be equal to k by 2 is to k by 3 is to k by 4. Right. Now here your k will get cancelled out. K सभी जगह पे cancel हो जाएगा. So it will be your 1/2 is to 1/3 is to 1/4. But in your options there is no 1/2, no 1/3, no 1/4. So what we will do? We will multiply all these three numbers with LCM of 2, 3, and 4. What is LCM of 2, 3, and 4? It is 12. So if I multiply here all of them with 12, so 12 by 2 is to 12 by 3 is to 12 by 4. It is 6. 3 4s are 12, 4 3s are 12. So answer will be 6 is to 4 is to 3. 6 is to 4 is to 3. Option C will be your answer. तो यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की कुछ चीजें आपको पता चली होंगी कि हियर व्हाट वी कैन डू, वी कैन मल्टीप्लाई विथ एनी कांस्टेंट and we can divide with any constant when there are three numbers in the ratio. Okay, again मैं repeat कर रहा हूँ. If there are three numbers or few numbers in the ratio, you can multiply all of them with same numbers or you can divide all of them with same numbers. Okay, रागिनी मैं वापस explain कर रहा हूँ, समझो last step. Okay, so here जैसे यहाँ पे ये यहाँ तक आपको पता चल गया, right रागिनी? 1/2 is to 1/3 is to 1/4. What I am doing, I am multiplying all these three numbers with LCM. LCM is 12. So if I multiply here with 12, यहाँ पे ऐसा नहीं कि multiply के साथ divide करना है, no. Just आपको सबको एक ही नंबर के साथ multiply करना है. So this will be 12 by 2, 12 by 3, 12 by 4. So this will be 6, this will be 4, and this will be 3. Okay. Yes, Samarth is telling sir उसमें most of the question ratio and proportion के थे. हाँ, तो वो होंगे, right? Exactly. आपके baseline test है तो वो थोड़ा चलेगा. And then next, दो question में ही है ना, right? Now let me take the next question. Okay, can I show you next question now, everyone? Okay, वीडियो सबका ऑफ हो गया है. This is not good thing. इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो. Okay, this is your next question. If A is to B equal to 2 is to 3 and B is to C equal to 5 is to 6, then what will be A is to B is to C? A is to B is equal to 2 is to 3, B is to C is equal to 5 is to 6. अब समझो यहाँ पे A is to B equal to 2 is to 3. That means can I say that A by B equal to 2 by 3? Yes or no? Right. In the same way here, B is to C equal to 5 is to 6. So can I say that B by C equal to 5 by 6? You can tell me yes if you agree, everyone. Hi Anna. Okay. Now what we have to do, we need to find ratio of A, B and C. अब इसका एक shortcut भी है. पहले मैं आपको shortcut दिखाता हूँ. Whenever you are having A is to B, whenever you are having B is to C, and you need to find A is to B is to C. A is to B is 2 is to 3, B is to C is 5 is to 6. So A is to B is to C will be, यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट. So A is to B is to C will be 5 2s are 10,
is to 5 3s are 15 is to 6 3s are 18. 10 is to 15 is to 18. Option B. This is shortcut. Right? Now I will tell you कैसे ये आता है. शॉर्टकट क्लियर हुआ वृंदा? शॉर्टकट के लिए आपको क्या करना है? जस्ट शॉर्टकट के लिए ये सिंबल्स याद रखने हैं, राइट? जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दिस सिंबल्स. दिस इज शॉर्टकट. फॉर एमसीक्यू यू नीड टू लर्न दिस शॉर्टकट्स. बट ये शॉर्टकट थोड़ा हैवी हो जाएगा. नाउ अब इसको करने के लिए सेम थिंग, सिंस दिस रेशियो इज कांस्टेंट, आप उसे k ले सकते हो, राइट? ठीक है. जैसे यहाँ पे a/2 is equal to b/3, right? You can take it as k. Here b/5 is equal to c/6. You can take it as k. Are you getting my point, everyone? वो k लिया है तो इसको कुछ और नाम दे देते हैं. Suppose l. Please give me some response. a/2 equal to b/3 equal to k. b/5 equal to c/6 equal to l. So what we have done here, रागिनी को डाउट है शायद. रागिनी b उधर गया तो मल्टीप्लाई, 2 इधर आया तो डिवाइड, c उधर गया तो मल्टीप्लाई, 5 इधर आया तो डिवाइड. रागिनी, ये स्टेप में पता चला? Okay. Now if you compare a/2 with k, can I write a equal to 2k? If you compare b/3 with k, can I write b equal to 3k? Similarly from here, can I write b/5 equal to l? So b equal to 5l and c equal to 6l. Yes or no? Is this clear, Ragini? Right, everyone? ये लॉन्ग कट थोड़ा मेथड जाएगा. अब समझो, b is same, b is equal to 3k, b is equal to 5l. So from here can I say that b equal to 3k equal to 5l? तो वहां पे हमें k और l के बीच का रिलेशन मिल जाएगा. So here अब आपके ऊपर है, बोलो व्हाट यू वांट टू कन्वर्ट. ये दिव्येश तो देखो मस्त सो के अटेंड कर रहा है. ए दिव्येश स्टैंड अप, दिस इज नॉट गुड. कैसे मस्त आराम से, मैंने बोला था ना ऑनलाइन क्लास में सब सो के अटेंड करते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो ऑन रखो. मतलब हद होती है. मतलब मैं आपको बताऊं ना, लास्ट ईयर तो क्या हुआ था, जैसे ऑफलाइन शुरू किया ना तो बच्चे बोल रहे हैं सर हम पहले राइट साइड सो के अटेंड करते थे पूरा, फिर जैसे राइट साइड पेन होने लगता था ना हम लेफ्ट साइड सो के अटेंड करते थे. इट वाज लाइक कि हम तो पूरे स्नैक एंड लेडर खेल रहे हैं, पूरे स्नैक बन गए हैं. सीधा बैठना तो भूल ही गए हैं. आइदर राइट साइड पे सो के अटेंड करेंगे या लेफ्ट साइड पे सो के अटेंड करेंगे. वाह भाई वाह. अब मुझे भी ऐसे ही शुरू करना पड़ेगा, राइट साइड सो के पूरा पढ़ाना पड़ेगा. राइट नाउ, सो नाउ समझो अब यहाँ पे 3k और 5l वो दोनों आपके सेम है, हाँ या ना? वेदर यू कैन कन्वर्ट k इंटू एल और l इंटू k. अब समझना यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जो भी आपको ठीक लगे. सपोज मैं l को k में कन्वर्ट कर रहा हूँ. सो 5l इज इक्वल टू 3k, सो l इज इक्वल टू 3k/5. राइट, तो c को आप कन्वर्ट कर सकते हो, इट इज 6. l आपका हो जाएगा 3k/5. 6 3s are 18k/5. राइट, नाउ ईच एंड एवरी नंबर इज इन योर k. अब आप a b c कर सकते हो. a इज इक्वल टू 2k, b इज इक्वल टू 3k, c इज इक्वल टू 18k/5. So first we can multiply all numbers with 5. 5 2s are 10k, 5 3s are 15k, and this is 18k. K cancel हो जाएगा. 10 15 18. So better to remember this shortcut. Okay, is this clear everyone? पहले ये clear हो गया, shortcut method as well as long cut method. तो ऐसे क्वेश्चन के लिए better to do shortcut. अब रोहित का डाउट बचा है, करेक्ट? एंड ओके वृंदा, लॉन्ग कट मेथड में डाउट है. ठीक है, शॉर्टकट तो पता चल गया ना वृंदा? ठीक है ठीक है. लॉन्ग कट में किस किस को डाउट है? देखो लॉन्ग कट वापस समझाता हूँ एवरीवन, सबका ध्यान दो. इट इज एक्जैक्टली हाई लेवल क्वेश्चन. विष्णु सर ने शायद एक हाई लेवल क्वेश्चन आपको दे दिया था. ये 7th का भी नहीं है, 8th का भी नहीं है, समझो ये फाउंडेशन का है. सी लॉन्ग कट मेथड में आपको समझाता हूँ. लॉन्ग कट मेथड में यहाँ तक पता है a/b इक्वल टू 2:3. सो a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू k. ये पता चल गया पहले. a इक्वल टू 2k, b इक्वल टू 3k. टिल हियर क्लियर एवरीवन? a इक्वल टू 2k, b इक्वल टू 3k. Now similarly b/c equal to 5/6, but here our ratio will be different. Here it is k, इधर मुझे दूसरा नाम देना पड़ेगा. Suppose I am giving it name l. So b equal to 5l and c equal to 6l. Is this clear? Yes or no? Okay. अब ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, जब भी हमें a b c का रेशियो चाहिए, a b c तीनों एक में ही होने चाहिए. If a is in the form of k, b is in the form of k, c is in the form of k, we can remove k. Yes or no? So in all the cases we want k only.
Okay, so what we will do, A we are having in K, B we are having in K, B also we are having in L, but C we are having in L. So what we will do, we will compare this both B. B is 3K and 5L. From here, we can make L as subject, L, we can convert L in terms of K, L will be 3K by 5. So we can convert this C in terms of K, 6 into 3K by 5, it will be 18K by 5. Okay, now we are having A is also in K, B also in K, and C also in K. Understood this? Shall I repeat this again? पहले हमारे पास A K में था, B K और L दोनों में था, C हमारे पास L में था, right? We need to convert all of them in whether K or whether L. So what we are doing, we are converting all of them in K. How we are converting all of them in K? We are comparing both values of B. Those are 3K and 5L. So L is equal to 3K by 5. So if I put here L equal to 3K by 5, 6 into 3K by 5, 18K by 5. So if I simplify here, K will get cancelled out and it will be 10 is to 15 is to 18. Is this clear everyone? अभी clear हो गया बृंदा? बृंदा clear है अभी? बोलो सौम्य, आपको क्या डाउट है? Sir, in the last part, 2K ratio to 3K ratio to 18K by 5, why is equals to 10 by K ratio to 15 by K ratio to 18 by K. I can't understand that. How is it possible? Sorry, can you repeat? Sir, before the last step, what we have done that we got this answer. Yes. And Yes, then? sir, I can't understand why we got this answer. Why we Can got? you explain it again so that I understood this, how we got this answer? From which step? From which step I should explain? A equal to, till which step you understood? You understood this A equal to 2K. Do you understand A equal to 2K, B equal to 3K, B equal to 5L, C equal to 6L, Soumya? From which step you are having doubt? Can you specify, please? So that I know from where I need to explain, Soumya. Sir, from 2K ratio to 3K Okay. ratio, that from there. Why 2K become 10K, right? So Soumya, what we have done, we have multiplied all the numbers with 5 here, Soumya. We have multiplied all the numbers with 5. In earlier, we have multiplied all the numbers with 12 because LCM was 12. Here, LCM is 5. So we have multiplied all the numbers with 5. So this will be 5 2s are 10K. 5 3s are 15K. And here 5 will get cancelled out, 18K. Then K will get cancelled out, 10, 15, 18. Clear, Soumya? Is it clear, Soumya? Thank you, Soumya. Okay, Brinda, can you take screenshot now? Okay, Ragini, note down this. Quickly note down this, everyone, so that we can see last doubt. And meanwhile, who was having other doubts? Siddharth, you were having doubt, ना? बोलो सिद्धार्थ, क्या डाउट है आपको? Yes, sir. Sir, suppose a question is there, minus 4 by 28 minus 17 by 56. Minus 4 by 28 minus 17 by 15. So it's 56. 56. Minus 17 by 56. Okay, 17 by 56. Sir, so the LCM would be 56 itself. Yes, LCM will be 56 itself. Sir, then minus 4 into 2. Yes. Then, sir, it means that minus 4 by 28 plus minus 4 by 28. Yes. Sir, then why would it not be equal to No. See. 8 by 28? Wait. What you are telling, minus 4 by 28, if I multiply with 2 and divide with 2, it is minus 8 by 56, correct? Yes, sir. Now you are telling that, sir, this minus 8 by 56 is nothing, but it should be minus 4 by 28 plus minus 4 by 28, correct? You are telling this. Yes, sir. So this is wrong. Minus 8 by 56 is not equal to minus 4 by 28 plus minus 4 by 28, because if you will add, this is minus 8 by 28 and this is minus 8 by 56. Understood this? Yes, sir. Okay, so got your doubt clear? Yes, sir.
Okay. DVS is asking again and again, sir, we should rejoin. When you should rejoin? Means why you have to rejoin? Now, Rohit, you are having doubt in this third question. Verify minus of minus x equal to x. इसमें क्यों डाउट है रोहित? ये माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, ये तो बस आपको करना है ना, राइट? सो फर्स्ट इफ x इज इक्वल टू 11/15, जस्ट आपको 11/15 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. सो minus x will be equal to minus 11/15. Again, you need to multiply minus sign. Minus of minus x is equal to minus of minus 11/15. That will be 11/15. So 11/15 is nothing but x. This is nothing but x. So minus of minus x equal to x. इसी तरीके से आपको सेम मेथड करना है सेकंड क्वेश्चन के लिए भी, 13/17 के लिए. Got this, रोहित? रोहित पता चला? हाँ, आराम से मुंडी निकल जाएगी. ओके. हाँ हाँ आदर्श, वो खत्म हो गया है, राइट? उसके बाद हम डाउट सॉल्विंग सेशन कर रहे थे.